सो गुड इवनिंग दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हमेशा वाले दोस्त अभिजीत और बासु, आपसे वादे के मुताबिक। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आने वाला डीडॉलराइजेशन है उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, और इससे पहले का भी जो बैकग्राउंड है उसको कवर किया जाएगा। मगर चूंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ और ना ही मेरा इस सब्जेक्ट को इतना लंबा चौड़ा होल्ड है कि मैं आपको कुछ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दूं इसमें, तो आई एम गिविंग द होल प्लेटफॉर्म टू अभिजीत एंड बासु हु विल बी कन्वर्सिंग अबाउट इट। वो दोनों लोग इस पर बात कर रहे होंगे और उनकी बातचीत में से आपके जो सवाल होंगे जाहिर है हम उनको आखिर में हमेशा लेते हैं, वो लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बात जो चलेगी वो अभिजीत और बासु जी के बीच में चलेगी। दोनों को मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में पहले भी आते रहे हैं। तो यहाँ से आई एम गिविंग द प्लेटफॉर्म टू यू अभिजीत एंड टेक इट ओवर। प्लेटफॉर्म इज यू, बिलोंगिंग टू यू एंड बासु भाई। वेलकम टू यू बोथ। थैंक यू दत्त साहब। थैंक यू दत्त साहब। सबसे पहले व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। और हम लोग आपको बताते चलें कि हम लोग इससे पहले 2 एपिसोड कर चुके हैं जहां पे हम लोगों ने हाईलाइट की थी, एक हिस्ट्री, आपको एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की थी कि डॉलर कैसे रिजर्व करेंसी बना और कब इसका गोल्ड से डिसोसिएशन हुआ, और उसके बाद किस तरीके से जो डॉलर है इट टर्न्ड आउट टू बी अ पेट्रो डॉलर, जहाँ पे गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के एग्रीमेंट्स हुए, जहाँ पे उन्होंने ये समझौता किया कि जो भी ऑयल की सेल होगी, देखिए ऑयल एक बहुत 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 बड़ा एनर्जी फैक्टर है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सारी दुनिया मूव करती है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। अगर वो चीज़ डॉलर में डिनोमिनेट हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि जो डॉलर की डिमांड है वो सिंथेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसकी वजह से दैट वाज द टाइम जब डॉलर की हेजीमनी स्टार्ट हुई। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी कवर किया था कि किस तरीके से जो चाइना और रशिया हैं, स्पेशली पोस्ट 2014 क्राइमियन सेक्शंस, जो क्राइमिया का इन्वेजन था बाय रशिया, उसके बाद कैसे सैंक्शंस के चलते चाइना और रशिया ने इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश की कि डॉलर कैन ईजली बी मैनिपुलेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज हम ये बात करेंगे अपने मित्र बासु जी के साथ कि जो, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि एक टाइम होगा, एक दिन होगा, एक हफ्ता होगा जिस दिन एक बटन होगा वो दबा दिया जाएगा और उस दिन डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी डॉलराइजेशन को टाइम लगेगा, ये धीरे धीरे होगा। ये धीरे धीरे कैसे होगा? जब मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो आपस में डिसाइड कर लेंगी इधर करेंसी स्वैप मैकेनिज्म, और दे आर गोइंग टू डम्प डॉलर एंड agree on some mutual currency, for example India and Indonesia. They will be trading in INR. Similarly, 2019 से Egypt and India are in discussions to have bilateral trade in INR, and there are more than 16 countries who want to trade with India in INR. Similarly, कल को अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है, इस चीज़ पे हम बासु भाई से डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी वो कब लॉन्च होगी, किसी एक स्पेसिफिक डेट में लॉन्च होगी, या जब एक जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं जब वो डॉलर्स के अगेंस्ट जाने लगेंगे और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट है वहाँ पे ये पैल्पेबल हो जाएगा, उस टाइम लॉन्च होगी। तो इस चीज़ के लिए वी हैव आवर गेस्ट बासु, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, so thank you for the recap, अभिजीत। अभी हम बात करते हैं कि अभी क्या रहा है अभी। So right now, I think we covered last time that Lula had gone to China and they have signed an agreement that they will trade in yuan going forward. Exactly. Right, and basically whatever Lula did was make a war cry against the dollar. Yes. He said something to the tune of that every night when I go to sleep, I wonder why does trade have to happen in dollars? Yes. Which is like throwing a open challenge to the US government. What has happened after that? Even following Brazil's lead, Argentina has signed up to trade with China in yuan. So
two very large economies of South South America America. are now going to be trading, do their bilateral trade with China in yuan. I would like to bring one more point for the audiences कि and I guess you will also agree with the fact कि जो सऊदी अरेबिया ने जो टैंकर ऑयल के डिलीवर किए थे चाइना को जिसकी जो पेमेंट है युआन में हुई थी और यूएई Yes, ने भी जो किया था और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने वो जो युआन थे उनको इन्वेस्ट कर दिए शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में एंड दे गॉट द होल्ड ऑफ द गोल्ड यूएई ने किया या नहीं किया बट मोस्ट लाइकली either they are going to invest the same yuan to buy some real estate that they usually do या फिर they are going for the gold मेरा ये yes, मानना है कि most likely this was the pilot project. absolutely. I think this is right now what is happening is basically testing of the waters. And once the testing is complete, the whole process, like there is something called the J curve. मतलब धीरे 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 एक चलता रहता है लेकिन अचानक ऐसा एक इवेंट होराइजन आता है जहां से वो शूट कर जाता है. मेरा मानना है कि दैट will be when the US finally defaults on its debts. उन लोगों का $31 ट्रिलियन डेट है. They actually have a website which keeps track of the US debt called the debt clock. तो अभी इसी महीने there is a Fed का meeting where I am sure that they are going to raise the debt ceiling. They have the Because if only they don't, solution to solve the debt crisis is to raise the debt ceiling. exactly. And debt ceiling इस बार करेंगे, अगले बार करेंगे, लेकिन ये this is not a solution to their problem. This This is cannot just like continue. kicking the can down the road. कभी ना कभी तो उनको इसका सामना करना ही पड़ेगा. When that happens, when the US finally defaults on its debts, that will be the moment when the BRICS countries will introduce their currency as an alternative. वो लोग बोलेंगे कि देखो ये लोग तो अपने धार नहीं चुका पा रहे, इनसे आप क्या इनका करेंसी लेके आप क्या करोगे? This is as good as worthless. तो हमारा what we are offering you is an alternative, a currency which is backed by real commodities, backed by gold, backed by silver, backed by crude oil, Rare backed earth by and metals. rare earth and metals, even food for that matter. Yeah. And so the world is already choosing, but yes, at that time it will be official. So आपको तो it's basic. अभिजीत को तो पता ही होगा कि there have been 19 countries who have lined up to join the BRICS nations. Yes. And so what is it telling us? It is telling us very clearly that the power, the economic power, the financial power is shifting eastwards. And one more important point that I would like to add is obviously it is common sense. जो ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन होगा in case it happens, they will try their best to make the bilateral trade to happen in something other than dollars. फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि कल ये परसों में एक्चुअली ये मीम भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है. जो इंडिया है वो रशिया से तेल ले रहा है, रिफाइन कर रहा है और यूरोप को दे रहा है. और Yes, आप यकीन माने कि इन्होंने जो गल्फ कंट्रीज हैं इंडिया ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू सप्लाई ऑफ ऑयल टू यूरोपियन यूनियन. yes, And this is more costly than it ever was for the European Union. And most importantly, जो इंडिया है ये ऑयल ये रशिया से दिरहम में ले रहा है. yes, सबसे बड़ा जो ऑयल कंज्यूमर है दैट इज चाइना. They settle it in yuan through China's CIPS platform. absolutely.
So I think that INR is still the new kid on the block, Yes. uh, because our economy is not as big as say the Chinese economy or the US economy, and it will take India quite a little while to get there. लेकिन ये भी है कि India is looked at very favorably by not just the not like by a lot of countries. Even the Western countries favor India to a very large extent because India has quote unquote democracy. Hmm. I guess True. Right. India has the most robust and transparent and functional democracy in the Exactly. world. In fact, this is the Exactly. only democracy in the world, I should say. Yeah, that one can debate that. One can definitely have a debate on that. Yeah. Uh, because of that, INR is being looked at very favorably by a lot of experts. In fact, there is this one economist called Nouriel Rubini. Okay. He is a Turkish American economist. He's called Dr. Doom because all of his predictions are basically like Coming everything is true. going to crash. Everything is going to yes. So he's called Dr. Doom. He was here in India, I think, last month or last month. He said that India, the INR has the potential to be a reserve currency because of India's democracy, because of India's openness and transparency. The INR will be looked at much more favorably than, say, the yuan or the ruble. That is something that Indians should be very excited about. What does that mean for India in that sense? It means that India will be, if you have a reserve currency, what that will mean is that you will be able to get credit at very cheap rates. And if you are getting credit at very cheap rates, what will happen is you can start new businesses. Yeah. So this is one aspect of it, but the fundamental thing, for as far as I understand, is that none of these BRICS countries really want their own currency to be a reserve currency, because the 100%. reserve currency, being a reserve currency, while has a lot of advantages, it also has a lot of disadvantages. Mm-hmm. Your currency has to be very strong, so in that case your exports will suffer. If you are an export Yeah. oriented economy, Yeah. your exports will suffer because your exports are going to be very expensive. So I am मेरा मानना है कि ये जो होगा, this will be a multiple currency system, a truly democratic system. बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें इंडिया, चाइना और रशिया जो है वो लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। व्यापार और में ये भी होगा, लोकतंत्र होना चाहिए, हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों बिल्कुल, नहीं? हाँ। बिल्कुल। ओके, तो ये so this is this is going to be something phenomenal. और ये मुझे लगता है कि 2025 या 26, this is the time when the US will finally default on its debt. And by that time, I think the pilot project that you were talking about वो भी मतलब उसकी जो कंप्लीट हो रहा होगा। प्राइमरी फिजिबिलिटी स्टडी है, एक टेक्निकल टर्म है इंजीनियरिंग में, वो प्राइमरी फिजिबिलिटी स्टडी है। आई गेस तब right, तक उसका जो रिजल्ट है वो भी उनको मिल चुका होगा कि इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। exactly, exactly. So I think the trust building, matlab, money is all about trust, Yeah. right? So the trust building
will take a little bit of time. I think the countries who are already on board in this de-dollarization drive, uh, they do trust each other, but of course, as we all know, that Asia is a country where it's very diverse, and there are like many different cultures. इन लोगों के I mean, there are conflicts that still need to be addressed. Say, for example, the India-China conflict. Yes. So this, I would think, will take a little bit of time, at least 2 years. And by then, I think the Americans will also not be in a position to service their debt anymore. Yeah. Because right now, not just they are financing not just Ukraine, but they are also thinking of taking on China. पैसा कहाँ से आएगा इन लोगों के पास? बिल्कुल। Not just China, and at the same Correct. time, they are also thinking about quantitative easing for the next few months, which means literally printing fake money. It is just like आपने एक पेपर लिया, उसको उस पे डॉलर का प्रिंट मार्क लगा दिया, दूसरे को दे दिया और वो घूम रहा है अब। लिटरली आप मतलब फोटो कॉपी कर रहे हैं आज की डेट में डॉलर की, एंड वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे. दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, व्हिच अगेंस्ट मींस मोर डेप्ट. And I guess they have made up their mind because this is slightly different, but because बासु जी ने ये बात कही है. कुछ दिन पहले एक CSIS है जो थिंक टैंक है, इन हाउस थिंक टैंक है बेसिकली आप कह सकते हो. उन्होंने वॉर गेम एक्सरसाइज किए चाइना के साथ, जिसके 12 इटरेशंस थे. Yes. और जिसके जो रिजल्ट्स थे वो यूएस के फेवर में नहीं थे, क्योंकि जो इनकी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है. Exactly. यूक्रेन वॉर के बाद बेसिकली जो इनकी लिमिटेड सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, अब उनको पता चला कि जो है वो पानी तो मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं. पानी एक नाक में घुस चुका है, दूसरी नाक में घुसना बाकी है. वही बात है, वही So बात है. ये इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और I do not remember the name of economist. I guess Basu Ji will tell you. He has said that maximum 25, 26 or 27. Again, एक दिन में नहीं होगा. जो डॉलर की अभी जो सिचुएशन है, जो ग्लोबल करेंसी है, 50% कम हो जाएगा. 50% कम हो जाएगा. And there's one thing again. If there are suppose 20 countries who want to trade with India in INR, it means for those 20 countries, INR is the reserve currency. Yeah, of course. Yes, yes. And this is exactly what Russia and China want. Basically, आप छोटे छोटे कंट्रीज के ब्लॉक के साथ ट्रेड कर रहे हो, जो आपकी प्रेफरेबल कंट्रीज हैं, उनके साथ आपकी कंट्रीज रिजर्व करेंसी हो. दैट्स इट. Absolutely. So I think the economist that you were talking about, his name is Simon Hunt. Yes, He's a Simon copper Hunt. expert. Simon He's a copper Hunt. expert. This is And he's important. also a sort of Doctor Doom. He's also a sort of Doctor Doom because Yes, yes. he's He's so also doomed कि like a उसने black bull. He's also a जो black bull. yes, जो Western financial system है, he has given up and he's so disgusted that he has left the London and permanently settled in Dubai now. Yes, Because he do exactly. not trust the Western democracy and financial institutions. Imagine. Yeah, and he's very and मतलब वो तो Yorkshire वाला बंदा है. And Yorkshire people are supposed to give it to you straight. मतलब 100%. Yeah, they do not beat around the bush. yeah. Uh, and he says it like it is. मतलब he says that 50% of the dollar index, basically the dollar index will lose Exactly. 50% of its value by 2027. And there's one more thing which we will cover in another episode, where we will see that the countries are dumping dollars. I mean, they are dumping their treasury bonds. एंड एक चीज Yes, पे मैं और गौर फरमाना चाहूंगा. देखिए, रिजर्व करेंसी के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. जितनी भी रिजर्व करेंसी होती है, इनका एक मैक्सिमम 95 टू 105 ईयर का साइकिल होता है, जहां पे स्ट्रांग हो जाने के बाद ये कोलैप्स हो जाती होती हैं. right, और ये exactly. कोलैप्स तभी होती हैं जब एक आप बहुत ही बड़े अननेसेसरी वॉर में यू आर फिक्सेटेड, व्हिच इज बेसिकली हैपनिंग विद द ग्रेट अमेरिकन एम्पायर. Yeah. Mhm.
तो And दूसरी चीज ये है कि जब आपकी करेंसी रिजर्व हो जाती है, जैसे बासु जी ने कहा कि स्ट्रांग हो जाती है, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप करेंसी मैनिपुलेशन करते हो, क्योंकि अगर आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, एंड दिस इज अ टॉक्सिक सर्किल, दिस इज समथिंग चाइना या डज नॉट वांट। तो अगर या एक करेंसी की जगह कई सारी करेंसीज होंगी जिसमें बायलैटरल ट्रेड होगा, देन आई गेस ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप सॉर्ट आउट हो, नेचुरली सॉर्ट आउट हो जाएगी। right, right. So the burden is not going to be borne by one country. The burden of the reserve currency burden is going to be distributed among many countries, and yeah, so that will be a much more level playing field for everybody. मतलब तुम जितना काम करोगे तुमको उतना ही मुनाफा मिलेगा। बस तो हाँ, there is one more thing actually. This is a very important point. Once upon a time, there was this Treasury Secretary called John Connolly. उसने कहा था कि the US dollar is our currency, but it is बट your योर problem. प्रॉब्लम, बट इट इज योर Yes. प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स एन ओल्ड टाइम। Yes. या बिल्कुल। हाँ, हाँ, अभी और जो हो रहा है, yes, अभी जो हो रहा है, so it is basically going to say that we own the commodities. The BRICS countries will say that we own the commodities, but how you get it is your problem, not our problem. मतलब show आप us, सोच, yeah, sorry, go ahead. no, show us the gold and then have, you can have access to our commodities. या Exactly. आप गोल्ड लाओ, ले आपको कॉपर चाहिए, ठीक है, गोल्ड लाओ लेके जाओ। या ऐसे मुझे लगता है हम लोग अंडरलाइन कम करते हैं इस बात को कि ये जो 20 कंट्रीज या 19 कंट्रीज जो आईएनआर में डील करने जा रही हैं, आप अगर टोटल ग्रॉसली ये चेक करिए कि 19 कंट्रीज जो है वो मिलके दुनिया की जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा है। सडनली यू फाइंड दैट यू नो हाउ लिमिटेड द डॉलर हैज ऑलरेडी बिकम इफ इट मटेरियलाइजेस। So yeah, that is 100%। actually a very good point, Mahesh ji. The thing is, very recently I read a report. There is something. This is a something that the Chinese government maintains. There is something called the Silk Road briefing. या In that Silk Road briefing, they came out with a report that the BRICS countries have overtaken the G7 countries This is true। in terms of Combined PPP. economy। Yes. So all the writing is on the wall. This is going to happen. The writing is on the wall. This is going to happen. Matlab, now, as Indians, we should look at how we can benefit from this. या इधर हमारे civilizational wisdom is very very deep, and that is why we have been accumulating gold for every year. I mean, it is the civilizational wisdom which has made acquiring gold a religious festival and almost like a duty. So every Dhanteras, people buy a lot of gold. ये क्या है? This is the civilizational wisdom is that the financial system may be what it is. It is good. You can earn money, do whatever, but at the same time, never completely trust the system. Trust only in that one thing which will never lose its value, which is gold. that is gold. Which is gold। Gold. So And in short, it means आप ये कहना चाह रहे हो कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, they can start buying gold. they should start buying gold. I think the price of gold is going to go up. 100%। When finally the dollar collapses, I think the price of gold is going to go up. अभी भी बढ़ रहा है, but अभी भी it's growing little by little, because still, okay, the world the dollar is still dominant right now. Yeah. But there will come a time when some experts have predicted that the price of gold right now, it is around $2,000.
Some experts have predicted it might go anywhere between $4,000 to $5,000, which is the same thing as saying that the dollar will lose half its value. Exactly, Hmm, exactly, exactly. hmm, hmm. And I think even the same is happening with crude oil also. The prices are supposed to go up, and I'm told soon it should be touching around 90. Yeah, yeah. I think आप again, देखिए कि जब ये जो कंबाइंड ऑयल कट हुआ था बीते 15 दिनों में जो कि अराउंड 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे का था, हाँ, it was done to ensure that there is a security in energy pricing, and I guess definitely the और वैसे भी the way Europe has been consuming Russian oil like hmm, anything, especially after war, it means there is a lot of demand for Russian oil. What does it hmm. mean? It means आज नहीं तो कल धंधा तो होगा. बिल्कुल होगा। हाँ. हाँ हाँ, मतलब यूरोप का देखिए ना, अभी तो फ्रांस ने बगावत कर ही दिया है. कर ही दिया है, बिल्कुल। France has already started singing a different tune. राइट आफ्टर द ट्रिप टू रशिया, चाइना, They राइट have आफ्टर कमिंग टू। also given a green signal, if correct me if I am wrong, to either Hungary or I guess Bulgaria for the construction of Russian-backed nuclear power plant. And they were saying Yes, कि the sanctions has got nothing to do with the nuclear energy or Russian nuclear energy for that matter. yes, yes. So यूरोप के पंडित जी वही हाल होने वाले हैं कि जो दुबे जो चौबे थे वो छब्बे बनने गए थे लेकिन वो दुबे बन के लौटेंगे. दुबई बन के आ हाँ. गए। good one. हाँ, तो बहुत सही बात है। बेहतरीन धोबी का कुत्ता होने वाला है. घर तो हाँ, इन्होंने छोड़ बिल्कुल, दिया है रशिया. अमेरिका है घाट, घाट के रह नहीं जाएंगे ये. बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा। अमेरिका तो फिर भी ठीक है. They will take a decade to recover from this shock, maybe a little more than a decade, but at least America has a lot of resources on its own land. Yes. या So they will have दैट्स to आल्सो देयर। basically, बिल्कुल। आई थिंक उनका अपना हाँ, कंजम्पशन भी है, मतलब लोकल जो कंजम्पशन है उनका वो भी काफ़ी बड़ा है, तो And आई मीन all, I guess the primary problem with the America is the wokeness. The moment they fix, they address the radical leftism and wokeness, they will be back on the track. या they will be back on track. I am pretty sure that Americans will bounce back from, but उनको शॉक तो लगेगा. That शौक तो is for लगेगा. sure. शॉक तो लगेगा, जोर का झटका शॉक लगेगा. लगेगा, और मुझे लगता है रिकवरी का जो पीरियड है ना उसमें भी डिपेंड करता है ना कि हु कमिट्स द मिस्टेक फर्स्ट। ये भी है ना कि पहली Right. गलती कौन करता है उस प्रोसेस में, एंड देन हु डोमिनेट्स देयर आफ्टर। बिकॉज देखिए ना, दुनिया में एक पावर हमेशा कॉन्स्टेंटली डोमिनेट कर जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। और Hmm. इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो जो जिस तरह से ग्रो किया है चाइना ने, और या बाकी लोग जो जिस तरह से ग्रो करके ऊपर आ रहे हैं, तो वो सब अमेरिका के सुपर पावर रहते हुए ही हुआ है, मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। तो आई डोंट नो हु विल फंड देम in growing up. I mean, it is possible they'll bounce back, but will they come back to the same position unless there is a war? Because I believe one I way am they can do sure. is they'll pick up a war somewhere or other. Yes, yes. That is So the only way they can come back. they are not going to be left with any other option other than Yeah. war to retain their dominance. But I don't think that they will be able to afford that war. That, After people, हाँ, but बोलिए. no, go ahead, please, please. So after this, after they default on their debts, and after the BRICS currency Is out there. comes out with their alternative currency, the BRICS grouping comes out with their alternative currency, and most of the countries shift to this particular currency. They don't have any other leverage on the countries who they are right now threatening that आप अगर उनके लिए आप if you support Russia then we will freeze your bank accounts, this and that, ये सब जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे.
then the एक्चुअली only thing that remains is that they use their war machinery. बिल्कुल, लेकिन और ये जो कितनों के फ्रीजिंग साथ वाला कितनों ऑप्शन के है, साथ आप ये देखिए फ्रीजिंग जो अकाउंट्स वाला जो ऑप्शन है, ये काम नहीं कर रहा है। स्विट्जरलैंड में आप ये देखिए कि वो नहीं काम कर रहा है ना इनका। तो दैट मीन्स यूरोप को भी समझ में आ रहा है कि व्हिच वे थिंग्स आर गोइंग, एंड दे आर वेरी क्विक टू टेक अप देयर साइड्स एज़ टू व्हिच साइड दे वांट टू बी इन। तो अब बेसिकली यूरोप की देखिए जो इंजिन्स अभी हैं। कुछ दिनों में आ, कुछ और एक बैंक्स हैं हुँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, दे आर गोइंग टू कोलैप्स कोलैप्स बिल्कुल। and we हुँ, will get to know the exact timeline when something is going to happen. या हुँ, And number two, ये point I would like to raise. इसके बाद एक last question बासु जी से, and after that if there are some questions we will address them. या हुँ, आपने ये कहा जो ब्रिक्स की combined economy है, it has surpassed the combined economy of G7. yes. And हाँ, बिल्कुल। add to this, एलन मस्क ने कहा था कि डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी. ब्रिक्स हैज द डेमोग्राफी. Yeah, बिल्कुल। सो हुँ, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखेंगे, अभी नहीं दिखेंगे, शायद 10 या 15 या 20 साल के बाद दिखें, लेकिन हुँ, डेमोग्राफी कैसे हमें फेवर करेगी बिल्कुल। व्हेन देयर इज अ ग्लोबल क्राइसिस, वी विल विटनेस इट. आई absolutely. कंप्लीटली एग्री। Cheap बिल्कुल, oil, cheap oil, cheap credit, and the चीप लेबर demographic dividend. या चीप लेबर, दैट इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग अ रोल, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। एंड सो जस्ट प्रोबेबली या यस यस प्रोबेबली यस अभिजीत, मुझे लगता है कि जो वन गुड थिंग दैट वी कैन डू अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इज व्हाइल व्हाइल इट इज गोइंग ऑन, प्रोबेबली दे शुड इन्वेस्ट मोर इन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज इज समथिंग, आई मीन टू हैव अ गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स that can be At utilized. least India must do, because if Yeah, you consider जो मोस्ट लाइकली जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, सऊदी बिल्कुल। अरेबिया हो या यूएई जी, हो या या चाइना है, या अगर आप हुँ, कल को अगर आप वियतनाम जैसी कंट्रीज के बारे में भी बात करते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज. इंडिया इज द या ओनली कंट्री हुँ, हुँ, जहां पे हर एक समस्या का समाधान बाबूडम है. बिल्कुल, हर एक समस्या का समाधान बाबूडम है, अगर बाबूडम नहीं होता रिजर्वेशन है. सही। हुँ, सो हुँ, आई गेस इंडिया इज द कंट्री जिसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा. एंड देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, हुँ, हुँ, हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट इज द रीजन आई वांट अ स्ट्रॉन्गर रशिया. as far as Russia is strong, Russia can dictate the terms. हुँ, चाइना और इंडिया के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, हुँ। ये दे कैन बी सॉल्व बाय अ डायलॉग. Yeah. हाँ, मुझे लगता है कि कुछ गिव एंड टेक की अगर नौबत आती है, एंड तो उसमें कुछ बात होनी चाहिए, एंड आई थिंक चाइना विल आल्सो हैव टू शो सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट ओनली वन साइडेड, दे विल हैव टू इट इज अप टू चाइना टू डिसाइड कि डी या डॉलराइजेशन और फाउंडेशन ऑफ मल्टीपोलैरिटी आपके लिए ज्यादा हुँ, मायने रखती है, या कुछ एक या गांव जो बाय द वे हिस्टोरिकली आपको बिलोंग नहीं करते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। चीज के पीछे आप लड़ाई करना चाहते हैं. और प्रॉब्लम यह है कि कोई भी डिफरेंसेस अगर इंडिया और चाइना के साथ हुए, आप यकीन करें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ब्रुसेल्स, ये जो सेंटर्स हैं ग्लोबल लॉबिंग के, ये सबसे पहले दिल्ली में आएंगे. एंड ये मतलब ये इनकी एक तमन्ना है, इनकी एक ऐसी ख्वाहिश है बिल्कुल। हुँ, कि इससे पहले कि हुँ, रशिया सक्सेसफुली अपना मिलिट्री इंटरवेंशन यूक्रेन में खत्म करे, हुँ, उससे पहले इंडिया और चाइना के बीच में कोई जंग हो कोई जाए। प्रॉब्लम, जंग हो जाए. हुँ, बिल्कुल। ये इनके लिए आई मीन दिस इज अ ड्रीम फॉर देम. बिल्कुल, देखिए अमेरिकन्स का Yeah. एक ड्रीम हमेशा रहता है कि जंग होनी चाहिए और अपने बॉर्डर्स से दूर होनी चाहिए। It is always their strategy to keep a war definitely going on, but away from their own shores. So this Also. suits them fine. Hmm. Yeah, so I have a very interesting take on this. I Yeah. say that okay, China for the US, China is the risk, India is the insurance, and सेम. we need as everybody knows, insurance doesn't come cheap. Never. So
Yeah. never Hmm. comes I cheap. mean, this is Sure to exactly get the how they used Pakistan. India was the risk and Pakistan was the Was the insurance. insurance. yes. Yeah. 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 Hmm. Okay, so let's take some questions. Here we have one. Can you see it, guys? This is Dilip Gogoi asking, after Japan, China owns the highest US Treasury bonds. Why do you think China will be interested in de-dollarization? I think this is factually wrong because right now China is the second. It China is no longer the was first. आफ्टर जापान इट हैज बीन मेंशन्ड. देखिए एक चीज है, एक टाइम चाइना के पास 1 ट्रिलियन प्लस था. नाउ दे आर समवेयर अराउंड 852 और 857. एक दिन में डंप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल. No. क्योंकि What they're आप देखिए doing is इंडिया से भी ज्यादा बड़ा बायलैटरल ट्रेड चाइना का अमेरिका के साथ है. Hmm. exactly. Hmm. Hmm. So there is a सो there is a there is a theory about what China is doing with its bonds. What they are doing is, they, as soon as their 10-year bonds mature, Hmm. uh, they are either shifting the money out of the US, Hmm. or they are buying short-term bonds, 3 month, 4 or 6 month bonds. Okay. मतलब ये Double. mature करते रहेंगे तो, so that so that people don't get an idea that China is actually slowly but surely taking their डंपिंग money डॉलर्स. out of the American system. यस. Hmm. Hmm. इस बीच They are में बहुत से not लोग हैं. reinvesting in long-term bonds. They are not reinvesting in long-term bonds. बिकॉज पीछे जो हुआ है, जो ऑफलोड किए गए हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनमें फ्रांस ने बहुत सारा ऑफलोड किया है, सऊदीज ने किया है. सऊदीज ने अराउंड 20%, 20-25% ऑफलोड किया Yeah, है. And Chinese का the same. So it's basically it's really on. Okay, next is asking about is in if the world is moving towards pegged currency, how the countries with flat currency is going to do the business. I guess that is a fiat currency. Yes, at least the BRICS is going to move towards pegged currency, and it would be. हम लोगों ने इसे पहले एपिसोड में डिस्कस किया था बासु जी के साथ कि it would be pegged with either gold, rare earth minerals, metals, energy, or maybe food. इसमें बस एक ही टेक्निकलिटी है कि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी जिसके तहत ऑडिट किया जा सके. दैट्स इट. exactly. हम्म. And to हाँ, answer this ये question, ऑडिट मैकेनिज्म को लेकर हमने बात की थी कि जब तक ये नहीं एस्टेब्लिश होते हैं, ये इशू रहेगा. बिल्कुल. हम्म. to ओके. answer Mr. Gogoi's question very simply, is that whichever country has fiat currency has to peg their currency against gold or दैट्स whatever इट. whatever they have. You have ओके. to have something to back up your currency. Otherwise, you can't do business with the pegged currency world. And most of the production will happen in the pegged currency world. If you want to buy our goods, either give us gold or you give us something else which is valuable to us. Simple. Maybe हम्म. your real estate, your buildings, whatever you can give. ओके. सो ये आई थिंक Shirish is asking as to what do you mean when you say dollar is a fiat currency. Fiat currency is a currency which is built on uh, a fractional reserve system. ये थोड़ा टेक्निकल है. ये इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड बना सकते हैं, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि फिएट करेंसी है क्या, कैसे आया, इस ये चलता कैसे है. That we can discuss, but it's a little technical and a long topic. 100%. ओके. 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 ऑलराइट. सो यहाँ पर दिलीप जी आगे पूछ रहे हैं, ब्रिक्स इज गोइंग टू ब्रिंग न्यू करेंसी लाइक यूरो, विल इट बी अ पैक्ड करेंसी? So euro is a fiat currency. Euro is The fiat BRICS is currency. going to bring a new currency, but it will not be a fiat currency. It will be a pegged Packed currency. currency. ओके. I mean, we have talked about this. See, the pilot project basically Saudi Arabia, when Saudi Arabia is selling one oil tanker or two oil tanker to China for yuan, and then again sends the same yuan back to China. So Shanghai Gold Exchange and getting a hold on equivalent amount of gold.
this is exactly how the BRICS currency is going to look like. I mean, if अगर आप Exactly. आपके पास ब्रिक X amount of BRICS करेंसी है, तो उसको मे बी आप चाइना के शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे उसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर चाइना के थ्रू आप रेयर अर्थ ले सकते हो, या फिर रशिया का ऑयल एक्सेस कर सकते हो, या मे बी सऊदी अरेबिया या यूएई का ऑयल एक्सेस कर सकते हो. So next he comes, he says, right now India has become uh, vice global south. So do you think INR will become number one reserve Number Number one one. currency? reserve currency. Yeah. I think we addressed this question in the beginning of the program, Yes. Hmm. that Okay. no country is looking to become the reserve currency in this new financial system. Hmm. Everybody is going to put up what they have, Yeah. They and are just interested in transparent democracy when Yeah. it comes yes. to currencies. That's it. Yeah. Hmm. Hmm. Right. Okay. So there is next, and I think last question is, so when you say gold will rise in dollar terms, is dollar will lose its value, then what will be happening to the value of the other currencies? Uh, Initially, there will be chaos, there will be mayhem, 100%. but when the dust settles, uh, whoever has gold Will survive. will smile all the way to the I bank. mean, imagine Turkey may, if I am not wrong, the inflation figure is more than 65%. Exactly. And there is no political stability, at least as of now, but they are buying gold like anything. Yeah. Yes. China produces the maximum amount of gold, but is still buying gold like there is no tomorrow. Yes. So And this is the India, reason. India has Indian households again because of our civilizational wisdom has 1.9 trillion dollars worth of gold. Wow. Hmm. Hmm. Wow. And I'm sure that this particular figure is going to Go come up. into the इस वाले negotiation. धनतेरस में $2 billion, $2 trillion हो जाएंगे. Huh, huh. By the next Dhanteras, definitely it will be $2 trillion. And Probably a what about lot the Hmm. more than that. gold? What about the gold lying in the temples of South? Exact. I mean, in my 2024 opinion, में apart from निकले anything, I guess इंडिया में कितना सोना है, we cannot really calculate. जहां तक मेरा मानना है. ये तो हाँ, गोविंदा it वाला is गाना very हो गया, difficult. सोना कितना But सोना at the है. same time, what I'm sure will happen is this is going to come into the calculations when the BRICS nations sit amongst themselves to decide how to peg the currencies. Yeah. Exactly. You And the know, good thing is that Russian economists are working on it. And Basu Bhai can tell you the name of the economist and the team they are working on it. Hmm. yes, his name is Sergei Glaziev. Okay. Yes. He's All the right. one who's working on it. So, ji, the Dilip ji Okay, again this is the is asking, last question, I guess. yeah, does it mean US is going to face economic crisis after the de-dollarization? They Yes, both are correlated with each other. That one is the function of other. Yeah. yes, yes. It The brings the US is economic going crisis to automatically. face US, not just the US and its vassal states are going to face Yeah. economic crises when de-dollarization happens. I mean, you can already see the crisis happening in Europe. It Yeah. will also hit US, Australia, Canada, all of these countries. Basically all of the yes sir nations. Hmm. Yes, Hmm. Hmm. All right. I think that is it. That's for today. And thank you very much, Abhijit and Basubhai, Thank for you coming so in much. and for your time. And always a probably, pleasure. in coming days, we'll talk about the other issues related to it as the development goes on. As anything new comes in, we'll talk about it further then. We will we both are going to monitor the future developments when it comes to US Treasury bond, and in case something interesting happens, we would love to discuss it with you. Yes. Wonderful.
Thank you ये very तो much for today. Yeah. या Thank you guys. Thank you for your questions and thank you for being there. Bye.